अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ वह गलत था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुल अलग था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत में गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, देश को उसका संविधान दिया और समानता के लिए खड़ी हुई। India, the constitution, I think it is critical that we are democratic and have democratic processes. I mean, I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. It's fascinating you're saying this because, I mean, I did think that was dreadful. It should not have happened, the emergency. One thing very similar, what you said your grandmother said to you, with the former president of India, Pranab Mukherjee. My last conversation with him, this was a few months before he passed away, I asked him that since you were so close to Mrs. Gandhi, the calling of the election at the end of the 2 years of the emergency that Mrs. Gandhi called, was it hubris, arrogance of an authoritarian leader that I will win, I want to demonstrate that? Or was it that she was beginning to have self-doubt? I asked Pranab Mukherjee, since you were so close, and Pranab Mukherjee told me that actually I can tell you I have direct conversational evidence. She began to feel that she might lose, but she wanted to put that to test, had a fair election and actually lost. So in some sense, having made that huge mistake, she rectified that and brought back the democratic institution. So it's sort of your brief words sort of it was very different though. Yeah. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. आपातकाल पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह एक गलती थी, बिल्कुल वह एक गलती थी और मेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था। आपातकाल के अंत में इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी। इस बाबत प्रणब मुखर्जी ने बसु से कहा था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें हारने का डर था। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल में जो कुछ भी हुआ वह गलत था और उसमें तथा आज की परिस्थिति में मूलभूत अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास कभी नहीं किया और कांग्रेस के पास ऐसा करने की काबिलियत भी नहीं है। हम ऐसा करना चाहें तब भी हमारी संरचना ऐसी है कि हम नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ ऐसा कर रहा है जो अपने मौलिक रूप से अलग है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश के संस्थानों में अपने लोगों की भर्ती कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम भाजपा को चुनाव में हरा भी दें तब भी हम संस्थागत ढांचे में उनके लोगों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। गांधी ने कमलनाथ के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि नाथ ने उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे
क्योंकि वे आरएसएस के लोग थे और उन्हें जैसा कहा जाता था वैसा वह नहीं करते थे। गांधी ने कहा कि इसलिए यह जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल अलग हो रहा है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि यह सवाल क्यों नहीं उठता है कि भाजपा, बसपा और सपा में आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बारे में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि यह एक वैचारिक पार्टी है, इसलिए हमारे लिए लोकतांत्रिक होना अधिक महत्वपूर्ण है। The Congress Party, people very often say that there isn't enough internal democracy in there. And I do understand that actually democracy is important at a national level. That is what we want. But since the question does arise about internal democracy, I want you to say what your thoughts are. Is that a fair criticism? Is it difficult? Go ahead. You're speaking to the person who has been pushing this stuff in the Congress Party for a decade. I'm the person who pushed elections in the youth organizations, pushed elections in the student organizations, got serious beating in the press for that. I was literally crucified for doing elections, right? I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. Nobody asked the question, why is there no internal democracy in the BJP? No one asked the question, why is there no internal democracy in the BSP? Nobody asked the question, why is there no democracy in the Samajwadi Party? But they asked the question about the Congress. There's a reason. We're an ideological formation. We're an ideological party, and our ideology is the ideology of the Constitution. It is the ideology of equality. So yes, it is. I think it is more important for us to be democratic. And okay, if others are not, well, that's fine. But for us, as the institution that fought for independence, that gave India the Constitution, I think it is critical that we are democratic and have democratic processes. I mean, I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. आपातकाल को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान के बाद से अब राजनीति तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने बड़ा बयान दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इशारों में गुजरात दंगे के लिए बीजेपी से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नवाब मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने 45 साल बाद स्वीकार किया है कि इमरजेंसी का निर्णय गलत था। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकारा है। दिल्ली के दंगे पर भी उसने माफ़ी मांगी है। अब भाजपा और प्रधानमंत्री की बारी है कि वे यह स्वीकार करें कि गुजरात का दंगा कहीं ना कहीं गलत था।